start once again. So as you know, up till now, we have completed the 3 chapters from our this paper number 8. And the last chapter of this paper we are going to see here today. The title of this paper is Nuclear Particle and Accelerator. Nuclear Particle and Accelerator. In this chapter, nearly 8 to 9 articles are there. For today's period, I outline the lecture as particle accelerator definition, types of accelerators, then first type of accelerator, that is linear resonance accelerator, or in short it is called as the resonance accelerator. And at the last I will conclude the lecture by giving the summary of this particular lecture, this one. Now particle accelerator and detector, at it is the name. Now please tell me, accelerator, this word is familiar to all of you. Am I correct? Yes, sir. Have you heard this word accelerator somewhere? Generally, Yes, sir. those Yes, people using the bike or four-wheeler have heard this word. And whenever the word accelerator comes before us, we understand that it is the something that is to increase or that is to raise the speed of our vehicle. Am I correct? So particle accelerator means to enhance, to increase the speed of particle. Now question is that what does mean to increase the speed of particle? So you must know that from the previous chapter we have seen 2 nuclear reactions, nuclear fission and nuclear fusion. And we have seen that these 2 nuclear reactions which we have seen in the last 2 periods or in the last 2 lectures or in the previous chapter, these 2 reactions are to be carried out with the help of some particles. Which are these particles? Particularly in case of fission, neutrons were there, isn't it? And in the similar way, another type of particles are required to carry out the different nuclear reactions. And to increase the rate of reaction, to enhance the speed of reaction, these particles which we are using as a reactant site are the particles which we are using as a projectile, that is a neutron, sometimes proton, gamma particle, beta rays. So these particles should be used in the reaction with a great speed. Are you getting what I am going to say? That means we want a nuclear reaction is to be happened. This nuclear reaction we want that is rate of reaction should be high. To increase the rate of reaction, the particles which we are using to cause this reaction or to happen this reaction, the energy of this particle should be high. यानी कि जो पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन को वक़ूपज़ीर होने के लिए या उनको कसने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे, अगर उनकी एनर्जी ज्यादा रही, वो चार्ज पार्टिकल रहे, स्पीड वाले रहे, उनकी स्पीड ज्यादा रही, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा, isn't it? And that means in order to increase the rate of reaction, that means the nuclear reaction particularly, in which we are using the particles, particularly the charge particle. So these charge particles should have the more speed. This charge particle should have the more speed means their energy should be high. And in order to increase the energies of this charge particle, so that this high energy particle may be used in the nuclear reaction, a particular type of device, a particular type of instrument is used, and that instrument is called as particle accelerator. Have you got the idea? Please tell me yes or no. Yes, sir. Yes. That means this particle accelerator is nothing but it is a device to increase the energy of charge particle. Why we have to increase the energy of charge particle? What is the benefit of this? I have explained.
in order to increase the rate of our nuclear reaction, the charged particle which are used, they should have the more energy, so that rate of reaction will be increased and reaction will be happen in a short period of time. And that's why this charged particle, before using in the reaction or before using as a projectile, their energy must be increased. And in order to increase the energies of this charged particle which they are produced in their concerned electron gun or in their concerned tube or etc., their energy it is to be increased. And in order to increase the energy of this charged particle, a particular type of device is used, and that device is called as what? What please? Particle accelerator, isn't it? And now the how this is possible? So to increase the energy of this particle by using a particular type of device, that is accelerator. In short, it is called as particle accelerator. What we have to take the use of this one? काय का इस्तेमाल किया जाएगा इस device के अंदर? So in this device there is a use of magnetic field, there is a use of electric field for the acceleration. ये जो particle accelerators हैं, ये जो किस्म के डिवाइस है, ये डिवाइस के अंदर दो किस्म के फील्ड्स का इस्तेमाल किया जाता। क्या मकसद है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्टिकल एक्सीलरेटर प्लीज? टू enhance or to increase the energy of the charged particle. And to enhance or to increase the energy of this charged particle, a particular type of device is used. That device is called as particle accelerator. And in this particle accelerator, there is a use of magnetic field to shape or to focus the trajectory of particle. And also there is a use of electric field for the acceleration, to accelerate. Accelerator बोल रहे ना, to increase the energy, to hide the energy, it is called as the accelerator. Now there are many types of particle accelerator available. They have their different uses. Each and every particle accelerator have its maximum and lower limit, यानी कि कम से कम कितना पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा किससे बढ़ाएगा, कौन सा एक्सेलरेटर कौन से पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाएगा, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन and depending on their configuration available. There are large number of particle accelerator are available which are used in the laboratory, in the particular in the nuclear laboratory. And out of large many particle accelerators available to increase the energy of the charged particle, few are there which are allotted for our syllabus. And out of this one that we are going to consider, and now these are divided into two types: electrostatic यानी DC accelerators, यानी कि direct current वाले जो accelerators, electrostatic accelerators, these are called. These are having उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर्स के अंदर जो दो तीन किस्में हैं. वन इज द कॉकक्रॉफ्ट वर्लेंटर एक्सीलरेटर. दैट मींस आई एम जस्ट गिविंग द नेम्स ऑफ दिस एक्सीलरेटर्स. कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर कौन से हैं? कॉकक्रॉफ्ट वॉल्टन एक्सीलरेटर which can increase the energy of proton up to 2 millionth electron volts. This is the capacity of this accelerator. Similarly, Venn digraph accelerator, it can enhance the energy of the proton up to 10 MeV. Another type of accelerator which also belongs from the electrostatic accelerator, it is tandem Venn digraph accelerator. It can enhance the energy of the proton up to 20 MeV. Are you getting please? जो कहा जा रहा समझ में आ रही है आपके बात? Yes, sir. Similarly, Yes, sir. another out of this electrostatic one is the kind is another जिसके अंदर resonance का इस्तेमाल होता है, resonance accelerator. This resonance accelerator is accelerator this resonance accelerator is the accelerator which can enhance the energy. In the resonance accelerator, there are two types. One is the linear resonance accelerator
and another one is the cyclotron. This cyclotron can enhance the energy up to of the proton up to 20 MeV, while linear resonance accelerator, which is called as the linear electron linac, it can enhance the energy of the proton up to 100 MeV to 50 eGeV, that is giga electron volts, isn't it? While the proton linac can increase the energy of the electron up to 70 MeV. Are you getting? किसके बारे में बोल रहा हूं मैं ये? To whom I am discussing this thing? Those who have just joined, they please come with us. Mahedia, Saleha, all this Sana, all these friends should understand that this the fourth chapter is started, and the title of the fourth chapter is Particle Accelerator and Detectors. So I am discussing about the particle accelerator. Particle accelerator, it is a device which is used to increase the energy of the charged particle, isn't it? There are the different particle accelerators available in the different institutes, in the different reputed institute or research laboratories. What is the use of this particle accelerator? जैसे कि नाम से समझ में आता, अपने गाड़ी को एक्सेलरेटर रहता, क्या करता, वो स्पीड बढ़ाता, तो वैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ाता. पार्टिकल की स्पीड बढ़ाना मींस टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. काय के वास्ते एनर्जी बढ़ाने की पार्टिकल की? बिकॉज दिस increased charge particle, when they are used in the nuclear reaction, they can increase the rate of reaction. Of which reactions? The two reactions we have seen previously. One, it is the nuclear fission, another is the nuclear fusion. But you should not understand that only these two types of nuclear reactions are available, but large many nuclear reactions are there which are to be carried out in the nuclear laboratory. But for our syllabus, which we have seen in the previous chapter, where nuclear fission and nuclear fusion, in these two reactions, the reactant site, reaction को आपको मालूम है, reactant site रहती, एक product site रहती. तो reactant site में किसी भी पार्टी, कोई भी जो है तो मटेरियल के ऊपर क्या बम्बार्ड किए जाते थे? पार्टिकल्स बम्बार्ड किए जाते थे. And these particles were neutron, proton, alpha particles, gamma rays, and so on. So that means in the nuclear reaction, particles, charged particles are used, and therefore to increase the rate of this reaction, the charged particle which we are using as a reactant, their energy should be high, and for that energy, these particles are to be increase the kinetic energy, potential energy, and to increase the energy of this particle, one particular type of device is used, and that device is called as the charged particle accelerator. The particle accelerators are of different types. The electrostatic accelerator or Van de Graaff accelerator, isn't it? Just that I have just shown in the previous one here in this way. Then Van de Graaff accelerator and tandem accelerator. Each and every accelerator has the capacity to increase the energy of the proton up to 2 MeV, 10 MeV, and 20 MeV. Similarly, the another type of accelerator which works on the basis of or on the principle of resonance, that is called as the resonance accelerator. In the resonance accelerator, two types of accelerators are coming. First one is the cyclotron, another is coming as a linear resonance accelerator. They can also increase the energy of the proton up to a limit which is given, that is 20 MeV. Electron length up to 100 MeV to 50 giga electron volt, and so on. And another type of accelerator is the synchronous accelerator, in which there is a synchrocyclotron, proton cyclocyclotron, electron cyclocyclotron, and storage accelerators are there. So these are the different types of particle accelerators available in the laboratory, which are used to increase the energies of the charged particle as per our desired energy. हमारे को जितनी एनर्जी पार्टिकल की चाहिए, उस एनर्जी तक पार्टिकल की एनर्जी उस लेवल तक ले जाने के लिए अलग अलग एक्सेलरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं. बट आउट ऑफ लार्ज मेनी एक्सेलरेटर्स व्हिच आई हैव कोटेड हियर, few accelerators are for our syllabus that we are going to consider. Now please unmute and tell me,
Have you got the idea which I have told you so far? इतना जो मैंने बताया उसको समझ में आया क्या? Please tell me, yes or no? Have you got, please? All of you are there, Tanaza, Yes, sir. Tahrim and all Mahedia and all newcomers also. All of you are requested to attend the periods regularly. During the discussion in the chat box, I will put the link of the attendance cum feedback. This is your attendance, and this attendance will be helpful for you to strengthen your performance in the internal evaluation. You will understand better. So all of you are requested to attend, because this is the better time to come the college. That was become difficult to you, but to attend the period from the home, just sit before the mobile or PC just for 40 minutes, not 40 minutes completely, just for 30 minutes. It is, I think, very easier to you. So during the lecture, in the chat box, I will put a link of a form which will be useful to give your attendance and your feedback. तो अभी लेक्चर के दौरान मैं चैट बॉक्स में लिंक डालूंगा, आप चैट बॉक्स देखते रहना, और वो चैट बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आपकी अटेंडेंस और आपका फीडबैक भी देते रहना. ठीक है महदिया, प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट. थोड़ा सा जो हुआ समझ में आया आपके? Yes, sir. Yes. Now after having seen this one, the first type of accelerator that we are going to consider here is the linear resonance accelerator, or in short you call as linear accelerator. Now what is the purpose of accelerator? To increase the energy of charge particle. So here this is called as the linear resonance accelerator because this accelerator works on the principle of resonance. Now before going to explain this particle accelerator, or before going to explain this linear resonance accelerator and its construction and working, please tell me whether you are knowing the term resonance. Anybody please unmute and tell me, आपने कभी लफ्ज रेजोनेंस सुना क्या? और अगर सुना तो उसके मायने आपको मालूम है क्या? है तो बोलिए, नहीं तो अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन. डू यू नो द वर्ड रेजोनेंस? प्लीज तहरीम, तनज़्ज़ा, महदिया, सना, सालेहा, ऑल ऑफ यू. Yes or no? I will explain, don't worry. Yes, sir. That means in your 12th standard, 2 experiments you have performed. One is the resonance tube and another is the sonometer. If you have not performed, listen me. In case of sonometer, there was a wooden box, isn't it? And on that wooden box, there was a wire. And you are having a tuning fork. In Urdu, you are calling as a doshakha. And on that tuning fork, you have hammered on the pad and keep it on that board of sonometer. What you found? कि ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेट करने की वजह से और वो वायर की अपने वाइब्रेट करने की वजह से एक समय ऐसा आता कि वायर के ऊपर के रखा हुआ राइडर, घोड़ा जिसको बोलते, वायर ऐसा वाइब्रेट होता और घोड़ा उसके ऊपर से नीचे गिर जाता और आप उसकी रीडिंग लेते. हमें करेक्ट? वो भी समझ में नहीं आया तो आपने रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया 12th में. पानी के अंदर एक ऐसा लंबी जो है पाइप, जिसको आप फुकनी बोलते हैं आम एक जबान में, वो वहां डाली हुई है और ट्यूनिंग फोर्क आपके उसके मुंह के पास ऐसा हैमर करके पकड़ते, एक मखसूस लेंथ के ऊपर आवाज बढ़ के आती. है मैं करेक्ट? हमेशा आती कि आवाज नहीं आती? No. जब लेंथ कम रहती उस वक्त, या लेंथ अगर उस रेंज में नहीं रही, जब तक आवाज बड़ी कम आती. लेकिन आप लेंथ को ऊपर नीचे करते एट ए पर्टिकुलर लेंथ of the tube from the water level, you found that when you hammered the tuning fork and put at the mouth of that particular tube, you found that the sound here to its frequency increases. आपको सुनाई दी जाने वाली आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखाई देती, ज्यादा सुनाई देती, नॉट दिखाई देती बल्कि सुनाई देती. उस वक्त आप रीडिंग लेते. क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है कि रेजोनेंस हो गया. रेजोनेंस हुआ मतलब क्या? आपके ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और उस पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर एयर जो जारी थी, उस एयर के वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? मैच हो गई.
जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती तब मैक्सिमम साउंड आपको सुनाई देता। ये दोनों की फ्रीक्वेंसी, एक है जो है तो एयर पाइप है, उसके अंदर एयर की वेव वेलोसिटी है, और एक आपका ट्यूनिंग फोर्क है, दोनों भी वाइब्रेट हो रहे, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएंगी तो उस वक्त आपको ज्यादा साउंड सुनाई देगा। कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का मैच होने का जो वक्त है, या ये मैच होना जो है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। समझ में आई बात? आपने सुना होगा जनरली लिटरेचर के लोग भी बोलते कि अपना उनके साथ रेजोनेंस नहीं होता। मतलब क्या? अपना उनका नहीं जमता, जो बोलते ना आप, अपना उनका, अपनी उनकी ट्यूनिंग नहीं जमती। क्या मतलब? यानी कि दोनों के दरमियान ताल, यानी कि उनका उनका बोला हुआ अपना बोला हुआ बराबर नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा। Isn't it? That is called as resonance. Have you got some idea about resonance? Please unmute one by one and tell me. समझ में आया आपके? Yes, sir. Yes, sir. महदिया, सना, सालेहा, प्लीज अनम्यूट फॉर a while second. Yes, sir. समझ में आया रेजोनेंस किसको बोलते हैं? यानी कि दो अलग अलग चीजों का, जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी गली में से दो अलग अलग मुकाम से लोग आ रहे भागते हुए, छोटी गली है, और वो गली में दोनों एट ए टाइम आ गए, तो उस वक्त जब दोनों एट ए टाइम एक जगह पर आ जाएंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। या इधर एक वेव की शक्ल में बात करूं, फिजिक्स की शक्ल में, इधर एक वेव है, इधर एक वेव है, दोनों वेव अलग अलग जा रहे, लेकिन जब दोनों एक ही गैप में अगर एक ही वक्त आ गए और दोनों जाकर मिल गए, तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे? कि दोनों का क्या हो गया? क्या हो गया बोलेंगे? रेजोनेंस। Resonance. समझ में आ गई बात? तो दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। एंड नाउ this our particle linear resonance accelerator is works on the principle of resonance. Now please unmute yourself one by one and tell me what is the function of particle accelerator. particle accelerator का काम क्या है जी? To increase the energy of charge particle. Am I correct? Isn't it? Yes, sir. To increase Yes, the yes, sir. to increase the energy of charge particle, it is the main function of particle accelerator, isn't it? And now how this energy it is to be increased? So it is to be increased with the help of a device. That device is called as particle accelerator. Every particle accelerator is working in the different circumstances. हर पार्टिकल का अपने पार्टिकल एक्सेलरेटर का एक्सेलरेट करना अपनी अपनी जगह पर है. Am I correct? That means some particle accelerators are can have the capacity to increase the energy of proton up to 500 MeV or 5 MeV, 10 MeV, 20 MeV. तो अब यहाँ पर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसको क्या नाम से पुकारते हैं? लीनियर रेजोनेंस एक्सेलरेटर. लीनियर क्यों बोलते? कि इन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड लेटर. आई विल you please see this figure very carefully. Can you see this my figures which I have? ऊपर और नीचे की फिगर एक ही है, ऊपर खाली सिस्टमेटिक डायग्राम है और नीचे एनिमेशन की मदद से बताया हुआ है. ऑल ऑफ यू कैन ऑब्जर्व द फिगर विच आई हैव पुट ऑन द स्क्रीन. सबको आपकी स्क्रीन पर ये फिगर नजर आई? Yes, sir. Yes. दोनों भी फिगर सेम ही है. ऊपर वाली फिगर को बोलेंगे हम सिस्टमेटिक डायग्राम और नीचे वाली की फिगर है एनिमेटिक डायग्राम. एनिमेशन के साथ बता रहा हूं मैं. आई बात समझ में? चलूं आगे. Now this figure is the above figure is nothing but this is the systematic diagram of linear resonance accelerator. ये जो फिगर है ये काय की फिगर है? ये जो फिगर दिख रही लीनियर रेजोनेंस एक्सेलरेटर इस तरह का रहता. अब किसका बना हुआ रहता है उसका कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए. लीनियर रेजोनेंस एक्सेलरेटर इज कंसिस्टिंग ऑफ ए series of coaxial hollow metallic cylinders 1, 2, 3 of increasing length. Are you getting please? It consists of Yes, sir. coaxial series of coaxial बोले तो क्या? एक ही एक्सिस में रखे हुए हैं, यानी कि लीनियर, इस वजह से उसका नाम लीनियर पड़ा. कैसे रखे हुए हैं? ये सिलेंडर दिख रहे हैं आपको? दे आर अलोंग दी वन एक्सिस. कोएक्सियल और लीनियर है, एक ही एक्सिस पे है, इस वास्ते लीनियर नाम पड़ा. अब रेजोनेंस क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूं. पहले फिर एक बार कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए. लीनियर रेजोनेंस एक्सेलरेटर इज कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कोएक्सियल होलो मेटालिक सिलेंडर्स of increasing length of
increasing length. Can you see the length is continuously increasing? First cylinder is having somewhat length, second is having slightly more, third is having more than one, fourth is having more than one. बतदरीज जो है तो लेंथ बढ़ती जा रही कि नहीं जी सिलेंडर की? दिख रहा आपको? ये फिगर में ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे आप, isn't it? और ये सबके सब चारों के चारों सिलेंडर, फिलहाल यहाँ 4 है सिलेंडर, कैसे रखे हुए हैं? कोएक्सियल है, चारों की लेंथ बढ़ी हुई है, चारों भी सिलेंडर एक दूसरे को कांटेक्ट में रखे, क्या कुछ तो भी गैप है जी बीच में? स्पेस है ना सर? Yes, that means these cylinders are arranged linearly in a glass vacuum chamber with some gap between them, isn't it? And these cylinders, alternate cylinders are connected together, यानी कि 1 3 connected together, 2 4, यानी कि even numbers को साथ connect करें. Can you see this figure please? Can you see this one? both figure देखिए, दोनों तरफ देख लीजिए, 1 और 3 दोनों को साथ कनेक्ट करें, 2 और 4 को साथ कनेक्ट करें. दिख रहा क्या? अरे दोनों कनेक्टर का कॉमन निकाल के किसको कनेक्ट करें? alternate cylinders are connected together and negative terminal is connected to the one end of the high frequency resonance generator and positive terminals are connected. यानी कि यहाँ से दोनों 1 2 1 3 से 5 को एक जगह लिए, उसका एक वायर निकाले, 2 4 4 6 को एक जगह लिए, उसका एक वायर निकाले, दो वायर निकले, दो वायर इसको ले जाके कनेक्ट कर दिए. The alternate cylinders are connected together. Odd number cylinders are being connected to one terminal and even number cylinders are connected to the second terminal of high frequency oscillator. High frequency oscillator समझता ना, जो ऑसिलेट होता और पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी देता, समझता ना आपको? पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल फिगर में कैसा बताते हैं, ऐसा अल्टरनेट साइकिल समझ में आती ना आपके? प्लीज ऑल ऑफ यू टेल यस और नो. Yes sir. Yes, so these even and odd terminals are connected to the high frequency oscillator. Thus क्या होगा जी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हुआ तो क्या होगा? एक साइकिल ऐसी रहेंगी पॉजिटिव की और दूसरी, समझ में आता ना? फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या फ्रीक्वेंसी जनरेटर एक साइकिल देता पॉजिटिव की और एक साइकिल देता, दो टर्मिनल रहते ना पॉजिटिव नेगेटिव, आपने कनेक्शन करे होंगे ना फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर में करे होंगे या आगे भी करेंगे. दो टर्मिनल रहते, एक लाल और एक काला रहता. लाल टर्मिनल पॉजिटिव रहता, काला टर्मिनल कैसा रहता? बैटरी रहती ना, बैटरी अपनी. हैव यू गॉट प्लीज? Yes sir. हाँ, तो एक रहता पॉजिटिव टर्मिनल, एक रहता निगेटिव टर्मिनल. तो जब ये निगेटिव, जब ये दो वायर निकालेंगे पॉजिटिव मतलब ऑड और इवन सिलेंडर्स के, और इसको अटैच करेंगे तो क्या होगा? इसकी साइकिल रहेंगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल एक रहेंगी और निगेटिव हाफ साइकिल एक रहेंगी, इजंट इट? And that means thus in the first half cycle if the tube 1 and 3 are positive, जब पहली हाफ साइकिल में क्या होगा? निगेटिव. पहली हाफ साइकिल में अगर समझो 1 और 3 अगर पॉजिटिव है तो 2 और 4 कैसे रहेंगे जी? उनके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव होगा. यस, यानी कि पहली साइकिल में क्योंकि अपने अल्टरनेट कनेक्शन करे हुए हैं, तो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल if the tube 1 and 3 or if the cylinder 1 and 3 are positive potential, then the cylinder 2 and 4 will have negative potential, isn't it? And after a cycle the polarity will, जब दूसरी साइकिल में क्या होगा? जो पहले पॉजिटिव थे वो निगेटिव हो जाएंगे और जो निगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे. am I correct? are you getting please? And these ions are accelerated only. अब क्या होगा फिर? see here, can you see this one? This is the electron gun, or it is the from this the electrons are coming. Suppose now these electrons are coming from this electron gun. When they come into the gap, जब ये गैप में आते तो ये इन्हें जो है तो सिलेंडर नंबर 1 कौन सा पोटेंशियल रख रहा? दिख रहा है क्या आपको प्लीज? निगेटिव पोटेंशियल, सॉरी बिगिनिंग में कौन सा पोटेंशियल रख रहा है? ये पॉजिटिव पोटेंशियल समझो. तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जैसे गैप में आएंगे उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी और वहां उनकी एनर्जी बढ़ जाएंगी. क्योंकि यहाँ से मेरा कर्सर दिख रहा है क्या आपको? बोलिए यस और नो. मेरा कर्सर दिख रहा? यस सर. तो ये यहाँ से जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, यहाँ पर आए, जैसे गैप में आए कि इसकी पोलैरिटी जो है तो इधर से इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पहले गैप में आए तो इन्हें जो है तो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला था, पॉजिटिव वाला निगेटिव को खींचेगा कि नहीं अपनी तरफ? तो यहाँ पर जो है तो इनको इनकी एनर्जी बढ़ जाएंगी यहाँ पे गैप में.
कहाँ पे एनर्जी का जो है तो एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा, सिलेंडर के अंदर हो रहा है कि सिलेंडर के बाहर, ये यहाँ हो रहा गैप में, एनर्जी इज गेटिंग इंक्रीज इन द गैप। अब ये बढ़ी हुई एनर्जी के साथ यहाँ पे आ रहे, सिलेंडर 1 की जो है तो लेंथ इतनी ज्यादा है कि जब तक ये सिलेंडर को पास नहीं करते, जब तक टर्मिनल की जो है तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की जो है तो पोलैरिटी बदलती नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है पहले सिलेंडर की लेंथ को पार करके दूसरे, पहले और दूसरे के गैप में यहाँ आया, पोलैरिटी बदल गई। समझ में आ रही बात आपके? भाई जो बोलो समझ में आ रहा है कि तुम्हारे? यस सर। जैसे ही ये गैप में आया, पोलैरिटी बदल गई, जो पॉजिटिव टर्मिनल वाले थे वो निगेटिव हो गए, जो निगेटिव टर्मिनल वाले थे वो पॉजिटिव हो गए। और जैसे ही यहाँ आए अगेन जो है तो गैप में जो है तो फिर पॉजिटिव टर्मिनल वाले ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, और फिर वो बड़ी हुई इंक्रीज एनर्जी के साथ जो है तो वो कहां पर गए, सिलेंडर नंबर 2 के अंदर दाखिल हुए। इजंट इट, दे एंटर इनटू द सिलेंडर नंबर 2 with increased kinetic energy and move slightly through this one. As soon as they come into the gap between 2 and 3rd here, again the polarity changes. उसका सिलेंडर नंबर 2 की लेंथ को क्रॉस करके यहाँ तक आए तक, फिर अल्टरनेट साइकिल बदल गई, क्योंकि अपन ने लगाई किसको, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को लगाए। समझ में आ रही क्या बात? और जैसे यहाँ आए अगेन द पोलैरिटी चेंजेस एज सुन एज दे कम इनटू द गैप, gap cylinder number 3 is of positive terminal, it's accelerate the electrons one again and their kinetic energies again increases. तो क्या समझ में आया कि यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां तक आया तो उसकी एनर्जी बढ़ी क्या कम हुई जी? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। Increase. Yes, that means after passing each and every gap, the energy of the particle is increased. लिहाजा उसको जितने ज्यादा गैप में से आप गुजारेंगे उतना ज्यादा क्या होगा जी उसका, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगी। And after passing through the 5 to 6 gap, that the kinetic energy of that particle will be increased, and this increased charge particle may be used for the nuclear reaction. समझ में आया कि आपके उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग? Yes sir. That means 1 and 3 will be of negative, 2 and 4 will be of positive. The ions are accelerated only in the, ions का accelerate हो रहे सिलेंडर में के गैप में, गैप में हो रहे। गैप में उनको क्या मिल रही, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल में से या निगेटिव सिलेंडर में से जैसे बाहर गैप में आए कि सामने वाला जो उसको मिल रहा वो अपोजिट पोलैरिटी वाला था। समझो मिसाल के तौर पर यहाँ इलेक्ट्रॉन गन है, समझो ये यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे निगेटिव चार्ज रखते, जैसे यहाँ आए इन्हें पॉजिटिव था, इन्हें उसको खींच लिया। अब वो बड़ी हुई एनर्जी के साथ इसके अंदर से इसको पास करके जैसे ये गैप में आए पोलैरिटी बदल गई। आप देख रहे होंगे फिगर में पोलैरिटी कंटिन्यू बदल रही। कैन यू सी? Can you see please? Yes sir. That means Yes, whenever they come into the gap, polarity changes, their kinetic energy is increased. That means after passing through the each and every gap, अब तीन पहले उसमें समझो 2 बड़ी, दूसरे उसमें और 4 बड़ी, तीसरे उसमें और 6 बड़ी, तो 5, 7, 8 गैप में से निकलने के बाद एनर्जी बढ़ेगी कि कम होंगी जी? बढ़ेंगी सर। Yes, energy will be increased, and this high increased or increased kinetic energy charge particle may be used for the nuclear reaction. So isn't it the positive ions entering the axis of the accelerator from an ion source through the aperture? Suppose they are having the kinetic energy, their velocity is suppose v1, then kinetic energy is 1/2 mv1 square is equal to suppose ve, and v1 is equal to under root 2 ve upon m, and therefore the length of the, अब लेंथ भी इस तरह से आप देख रहे लेंथ सबकी बड़ी हुई थी, यानी कि लेंथ भी सिलेंडर की इस तरह से एडजस्ट की जाएगी कि वो सिलेंडर को पार करके बाहर आने का वक्त और पोलैरिटी बदलने का वक्त कैसा रहना। नहीं तो सिलेंडर के पहले सिलेंडर में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले दूसरे सिलेंडर की तरफ जाने को, दिख रहा है क्या आपको ये एरिया? और उस वक्त यहाँ समझो पोलैरिटी समझो ये निगेटिव रही, तो यहाँ पर एक्सीलरेट होंगे क्या जी? वो सामने वाला No कैसा? sir. हाँ, सामने वाला कैसा रहना? निगेटिव, Opposite. पॉजिटिव पोलैरिटी वाला रहना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गैप में आने का वक्त और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की पोलैरिटी बदलने का वक्त कैसा होना? सेम चाहिए। That is called as resonance. That is called as the time of arrival of the particle in the gap and time of changing the cycle. Time of changing the cycle should be same, and that is called as resonance. That is called as resonance.
And that's why this experiment or this device is called as linear resonance accelerator. Accelerator इस वास्ते कि नहीं accelerate करता, linear क्यों कि सिलेंडर इसके अंदर कैसे रखे जाते along the axis, और क्या होता है इसके अंदर कौन सा है कि आयंस का गैप में आने का वक्त और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की पोलैरिटी बदल, यानी कि हाफ साइकिल बदलने का वक्त कैसा होना, सेम चाहिए. That means it is resonance, and that's why this oscillator, this accelerator is called as linear resonance accelerator. Have you got the idea of giving the name as linear resonance accelerator? Please. Yes, and sir. The length of the tube is so adjusted that the positive ions come out of it. The tube has the positive potential, and next tube has the negative potential. That means the potential change the sign. Positive ion is again accelerated in the space between 1 and 2, and on reaching the tube 2, velocity v2 of the positive ion is given, and that is equal to suppose 1/2 mv2 square is equals to 2 पहले वक्त ve, दूसरे वक्त फिर 2 evv, and alternately the energy goes on in under root 1, under root 2, under root 3, etc. The energy will get increase, isn't it? Can you understand? So how much energy will we get increase after passing through the, तो energy कितनी बढ़ेगी इसका dependence किसके ऊपर है जी, कितनी energy बढ़ेगी? From this formula and from the discussion which I have made, can you tell me how much energy will be increased is depends on which factor? कितनी एनर्जी बढ़ेगी एक अंदर से निकलने वाले पार्टिकल की, यस में से निकलने वाले पार्टिकल की एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 4 MeV, 10 MeV, 20 MeV. This will depend on ions. It will depends on the gaps between the कितने सिलेंडर आप लगाते in that particular linear resonance accelerator, how many cylinders you have arranged linearly, and how many, क्योंकि after passing through each gap एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इजंट इट? समझ रहे ना आप? जितने ज्यादा यहाँ थोड़ी बढ़ रही, यहाँ थोड़ी बढ़ रही, आपने बताया ना ये फार्मूले से कि भाई पहले वक्त वी, दूसरे वक्त √2v1, तीसरे वक्त √3v1. दैट मींस आफ्टर पासिंग ईच एंड एवरी गैप एनर्जी इज गोज ऑन इंक्रीजिंग. समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? Yes, sir. तो दैट मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी उसकी बढ़ेगी, and after passing through the n number of oscillate gap, 1/2 mv1 square nv energy will be get increased. So have you understand, please? Have you got the idea, please? Yes, sir. So with this one, this chapter is this article is over here, isn't it? Have you understand? आपके समझ में आई बात क्या बोल रहा मैं? तो Yes, sir. समझ में Yes, sir. आया? और can you got, please? Yes, sir. So this thing is the most important, isn't it? Now I have pasted the link of your attendance here. You are requested to click this one. Mahaidiya, आपको नहीं समझ में आया तो you can ask me anytime. I will explain. And with this one, this article is over. That means in the gap, energies get increased. Thank you for joining me. Remaining thing we shall see in the next period. I have taken the link, please. All of you, Mahaidiya, Taskin, Saleha, Tanaza. Yes, sir. Thank you for joining me. Please give the attendance. We shall stop here today. Have a nice